फ्रेंड्स हमने अभी तक पढ़ा है क्रिएट मल्टीपेज डॉट नेट मॉवी एप्स विद टैब एंड फ्लाई आउट नेविगेशन। ये हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में। और इस वीडियो में हम शुरू करते हैं स्टोर लोकल डेटा विद SQLite in .NET MAUI ऐप। विल स्टार्ट द वीडियो। तो इसमें हमें मेन जो ये टॉपिक है SQLite पे निर्भर करता है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हम इसमें कोशिश करेंगे कि इस कंडीशंस को भी कॉपी करने के लिए, कवर करने के लिए। तो विल स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन फर्स्ट। व्हेन यू आर बिल्डिंग मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है, इट्स कॉमन टू स्टोर डेटा लोकली ऑन अ डिवाइस फॉर परफॉर्मेंस रीजन। .NET Multi-Platform App UI, okay, MAUI, allows you to cache data locally on the device on the which application is running. You can store this data using several different technologies. To store relational data, you can use a SQLite database. Suppose you are building a social media application that lets users connect with each other. Because the data about users is stored remotely, you have to call the REST endpoint to get information about the users with which you are connected every time you restart the application. The design works, however it's inefficient because you have to keep downloading the user's information from the server every time you restart the application. A more efficiently designed app downloads the user data once and save it locally to the device. ओके, समझते हैं यहाँ तक कि जो SQLite है, राइट। तो SQLite करता क्या है? SQLite क्या करता है? स्टोर करता है रिलेशनल डेटा को, ठीक है। सपोज़ करो हमने एक एप्लीकेशन बनाया, ठीक है। अब जब भी मुझे एक यूज़र एप्लीकेशन बनाया, यूज़र डिटेल्स एप्लीकेशन, तो ऑब्वियसली जो डिटेल्स आती है सर्वर से आती है। तो एप्लीकेशन जब भी लॉन्च करूँगा API हिट करूँगा, ओके। API हिट करके मैं जितने भी यूज़र्स हैं उसको मैं स्टोर करूँगा, उसको मैं शो कर UI में, ठीक है, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या होगा कि अभी क्या होगा कि जितने बार मैं API हिट कर रहा हूँ, ठीक है, उतने बार मैं डेटा शो कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्या होगा कि अब यहाँ पे क्या होगा कि मुझे हर बार सर्विस को हिट करना पड़ रहा है क्योंकि जब जब मुझे डेटा चाहिए। बट SQLite क्या करेगा, जो आप क्या करोगे कि सर्वर से SQLite में स्टोर करोगे और जब भी री लॉन्च करोगे एप्लीकेशन, तो हम क्या चेक करेंगे कि यूज़र जो लास्ट मॉडिफाइड डेट है वो अपडेट हुआ है कि नहीं। यदि सर्वर बोलेगा नो आई डोंट हैव दैट डेटा ओके आफ्टर दिस डेट, तो हम उस डेटा को कहाँ से पुल करेंगे? SQLite से पुल करेंगे। मतलब लोड डायरेक्टली शिफ्ट हो जाएगा SQLite डेटाबेस पे, लोकल पे, और एप्लीकेशन एफिशिएंटली इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। So this design works, however, okay. So a more efficiently designed app downloads the user data once and save it locally to the device. तो यूज़र का डेटा हमने क्या किया, डाउनलोड किया और उसको सेव कर दिया लोकल डिवाइस में। With this design, you only have to download information for other users when you want to make a connection. You can create this more efficiently designed by using a local database, correct? In this module, you build a .NET MAUI application that stores data locally in the database. You start by exploring the different data storage options that are available. Next, you look at SQLite and learn how to insert and retrieve data. Finally, you use the asynchronous methods available in SQLite to interact with the database without blocking the UI. By the end of this module, you are able to build a .NET MAUI applications that store data locally in SQLite database. ठीक है। Learning objectives क्या in this module? You learn how
Compare different data storage options that are available in .NET MAUI operation. Store relational data in SQLite database. Interact with the database asynchronously to make sure that UI remains responsive. Okay, that we can check in the next video. So नेक्स्ट यूनिट में हम पढ़ेंगे कंपेयर स्टोरेज ऑप्शन. .NET Multi Platform App UI provides multiple storage options for caching data locally on a device. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे पास SQLite है, हमारे पास मल्टीपल स्टोरेज ऑप्शंस है. किसके लिए? कैशिंग डेटा लोकली ऑन द डिवाइसेस डिपेंडिंग ऑन द नेचर, स्ट्रक्चर एंड साइज ऑफ द डेटा. करेक्ट, हमेशा याद रखना नेचर कैसा है, स्ट्रक्चर क्या है और साइज ऑफ द डेटा क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको चूज करना है storage options. Okay, the three most commonly used options for storing data locally in .NET MAUI app are preferences. Okay, preferences stores data in key value pairs. Okay, एक की होगा उसका एक वैल्यू होगा. की हो सकता है जैसे सेशन आईडी, सेशन एक्सपायरेशन टाइम, ओके, यूज़र आईडी, यूज़र नेम, ओके, एनी कोई भी ऐसी वैल्यू जिसे आप सेव कराना चाहते हैं फॉर कैशिंग पर्पस. ठीक है, सो प्रेफरेंसेस इज अ वन थिंग. फाइल सिस्टम स्टोर loses files directly on the device through file system access. मतलब हम क्या करेंगे, एक फाइल क्रिएट करेंगे, ओके, और उस फाइल को एक्सेस करेंगे. तीसरा है डेटाबेस, स्टोर्स डेटा इन रिलेशनल डेटाबेस. स्टोर डेटा इन अ रिलेशनल डेटाबेस. तो तीन ऑप्शन हैं, तीन स्टोरेज ऑप्शन है. पहला है प्रेफरेंसेस, दूसरा है फाइल सिस्टम, तीसरा है डेटाबेस. In this unit, we look at these storage options and situations for which each option is most appropriate. When to use preferences. Okay, हाँ, अब चेक करते हैं कब हमें preferences यूज़ करना चाहिए. तो पहला इंटरव्यू में पूछता है, पहला ये पूछेगा कि how many ways we can store the data. So we have three ways: preferences, file system, database. Based on the nature, structure and the size of data, we will choose the storage options. Okay, now he will ask when we have to use preferences. तो क्या है, preferences are convenient when you are working with simple piece of data such as user selection. They are often used to allow users to configure the application. You store this data as a set of key value pairs. For example, suppose you wanted the users to be able to specify whether the app should save their username and password between the session. You can store the user's choice in preferences. The following code shows how to store a boolean value recorded in the save login details variable to preferences named save login, and then later read the data back. Notice that the get method expects you to provide a default value if the specified preference isn't found. Okay, तो bool save login details. Okay, preferences set में हम क्या लिखेंगे, preferences के अंदर एक मेथड है set की एंड वैल्यूज होती है. की क्या होगा, स्ट्रिंग टाइप का होगा. ठीक है, सेव लॉगिन और सेव लॉगिन डिटेल्स को हमने सेव कर दिया. ठीक है, द प्रेफरेंसेस क्लास आल्सो कंटेन्स मेथड्स फॉर डिटरमाइनिंग whether a named preferences exist. Contains key. Deleting a preferences remove and removing all preferences data called clear. ओके, तो तीन चीज़ें होती है. नेम प्रेफरेंसेस एग्जिस्ट है कि नहीं, उसे कैसे चेक करेंगे, कंटेंट्स की से. डिलीटिंग अ रेफरेंस पर्टिकुलर रेफरेंस को डिलीट करना है तो रिमूव, और रिमूविंग ऑल प्रेफरेंसेस डेटा क्लियर. समझ रहे हो, रिमूव फॉर डिलीटिंग अ प्रेफरेंसेस
Removing all preferences data, clear. You should only store simple data types as a preferences. You cannot store references to large objects such as list, collection and array. याद रखना, सिंपल डेटा टाइप्स को ही प्रेफरेंस में स्टोर करना. बूलियन वैल्यू हो गई, कोई फ्लैग हो गया, कोई सिंपल एक कीवर्ड हो गया, ठीक है. जैसे यूज़र एक्सपायरेशन है हुआ है कि नहीं, इस डेटा वैलिड और नॉट, ओके, काइंड ऑफ. यदि कोई लिस्ट है, कोई लार्ज ऑब्जेक्ट है जैसे लिस्ट, कलेक्शन और एरे, उसे हम यूज़ स्टोर नहीं करेंगे. किसमें? प्रेफरेंसेस में. For this type of data, for this large object type of data, use the file system or database. ठीक है. When to use a file system? Mobile and desktop device have a file system with a hierarchical directory structure of folders and files. It's convenient to use the file system when you have loses files such as XAML, binary or text file. For example, suppose you want to store log data locally on the device. You can create a text file, save this file to the file system and write logs it as events happen. You can also serialize large data structure to a file and cache it locally on the file system if you need to save when the app shut down. When the app restart, you can read this data back into the memory. The following code shows example of serialized data to a file and saving this file, and then reading the data back and deserialize it back into the memory later. Here we use JSON for serialized format, but you can save the data in whatever format you feel is most appropriate to the nature of the data and the app security requirements. तो हमने यहाँ क्या किया है कि एक लिस्ट लिया है, डेटा टू बी रिटर्न टू द फाइल सिस्टम एंड रीड बैक लेटर. तो यहाँ पे एक लिस्ट है कस्टमर, सीरियलाइज एंड सेव इट. तो इस डेटा को हमने क्या किया, सीरियलाइज्ड किया और उसको फाइल में राइट किया, राइट ऑल टेक्स्ट, and then read and deserialize it. File dot read all text, okay, and then deserialize it. तो जब भी हम फाइल को स्टोर करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, उसको सीरियलाइज करना होगा, फिर राइट ऑल टेक्स्ट को फाइल में लिख देना होगा. फाइल में राइट किया और जब भी रीड करना होगा तो उसके लिए क्या करना होगा, उसको डीसीरियलाइज करना पड़ेगा. पहले रीड करेंगे फिर डीसीरियलाइज करेंगे. फिर से एक बार, डेटा टू बी रिटर्न टू द फाइल सिस्टम एंड रीड बैक लेटर. तो सबसे पहले एक कस्टमर जो है, कस्टमर लिस्ट है हमारे पास, उसको हम क्या करेंगे, पहले सीरियलाइज करेंगे. उस सीरियलाइज डेटा को हम राइट करेंगे, राइट मतलब सेव करेंगे. कहाँ पे, फाइल में. अब जब भी रीड करना होगा तो मतलब उसको फैच करना होगा तो फर्स्ट विल रीड द डेटा फ्रॉम द फाइल थ्रू द रीड ऑल टेक्स्ट मेथड. That raw data, as this is serialized format, we have to deserialize that data based on the type of the data. So हमें पता है कि वो डेटा किस टाइप में था, कस्टमर लिस्ट था, तो कस्टमर लिस्ट में हम deserialize करेंगे, right? Access the app sandbox. When you are working with a loose file such as XML files, you need to store them in a suitable location in the file system. Some of this data might be sensitive and you don't want to save it into the local location when other apps or users could easily access it. .NET MAUI apps provide the app sandbox. The app sandbox is a private area with which your application can work. By default, no other application can access this data other than the operating system. You can access the sandbox by using the app data directory static property of the file system class. So string path is equal to file system dot app data directory. ठीक है. अभी क्या किया है, फाइल सिस्टम के अंदर एक डायरेक्टरी क्लास होती है ऐप डायरेक्टरी, उससे हमने पाथ निकाला. इन दिस कोड द पाथ वेरिएबल कंटेंस द फाइल पाथ. और फाइल पाथ कहाँ से निकाला, फाइल सिस्टम डॉट ऐप डेटा डायरेक्टरी से. सो द फाइल पाथ टू द लोकेशन where you can store files for the application to use. Okay, the file path to the location
where you can store the files for the application to use. You can read and write the data to files in this folder by using the technique shown in the when to use the file system section. So file system.app data directory. Okay. The file system.app data directory properties is an abstractions of device specific path. It's evaluates to different folder on Android, iOS and WinUI 3. This abstraction allows you to write code that references the sandbox in a manner that independent of the platform on which it runs. Use these abstractions rather than referencing a device-specific path explicitly in your code. So file system.app data directory properties is an abstraction of a device-specific path. Guidelines for saving data in iOS. Apple has iOS guidelines for where files should be stored. There are two main locations. There are two main folders. The first is the library folder. As described previously, the file system.app data directory property returns this folder. Use this library folder when you are storing app generated data. The documents folder. Okay, the first one is library folder, दूसरा documents folder. The following code snippet shows how to reference this folder in the doc folder variable. Use the documents folder to store user generated data only. This data is created in direct response to a user action. For example, if you are creating a text editing application such as Microsoft Word, you have stored this document in the documents folder. String doc folder is equal to environment.get folder path environment.special folder.mydocuments. When to use a database. It is a good idea to use a local database when you have a relationship between data or when you want to filter the data over time. For example, in the social media scenario, each post contains data about the post, such as the timestamp and the contents. However, each post also has a relationship to a user who made the post. It makes sense to represent this relationship in a database to prevent data duplication between posts and also is to improve the efficiency of searching the data. A SQLite database is a file and you need to store it in an appropriate place. Ideally, you should create a folder under the app data directory folder in this sandbox and create the database in this folder. तो कब हमें यूज़ करना है डेटाबेस को? तो कब करना है? जब यू हैव अ रिलेशनशिप बिटवीन द डेटा. मतलब व्हाट्स द रिलेशनशिप? मतलब एम्प्लॉय है, सैलरी है और एड्रेस है. अब एक यूज़र है जो एक एम्प्लॉय है, ठीक है, जिसे क्या मिलता है? सैलरी मिलता है. जो एम्प्लॉय है वो एक ह्यूमन है, ह्यूमन कहीं रहता है जिसका वो एड्रेस है, ठीक है. जिस कंपनी में ह्यूमन काम करता है, एम्प्लॉय काम करता है, उस कंपनी का डिटेल्स होगा, तो उसके लिए कंपनी डिटेल्स टेबल होगा. कंपनी हैव अ वर्टिकल्स डिपार्टमेंट्स. ओके, कंपनी हैव अ एम्प्लॉय डिटेल्स, HRA. ओके, फिनेंस सेक्शंस, हायरिंग, ठीक है. तो हर चीज़ के एक टेबल है और हर टेबल के अंदर जो डेटा है वो एक दूसरे से क्या है? कनेक्टेड है. तो इफ़ or when you have a relationship between data or when you wanted to filter the data over time, तब आप किसे यूज़ कर सकते हो? SQLite को, डेटाबेस को, ठीक है. और SQLite database is a file. एक फाइल है. SQLite database क्या है? Is a file and you need to store it in appropriate place.
You need to store it in a appropriate place. Ideally you should create a folder create करना चाहिए किसके अंदर, ऐप डेटा डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है, इन अ सैंडबॉक्स एंड क्रिएट द डेटाबेस इन फोल्डर। देखते ये है कहाँ पे, ऐप डेटा डायरेक्टरी। ये होती क्या एक्चुअली, ऐप डेटा डायरेक्टरी एक स्ट्रिंग रिटर्न टाइप कीवर्ड है, ठीक है, 9 10 11 से आया है ये। दिस लोकेशन इज नॉट विजिबल टू यूज़र एंड इज बैकड अप। तो ये लोकेशन कभी दिखेगी नहीं आपको, तो ये काफ़ी सिक्योर है, ठीक है, सिक्योर। Okay, now let's check. Suppose you are building a .NET MAUI application for iOS that enables users to create music. You want users to be able to save their work to a file so that they can restart the application and continue working where they left off. In the iOS app sandbox, to which folder would you save this file? Obviously, music तो नहीं होगा. Document or library? What do you want? Document या library? Document में होना चाहिए, right? You want to users to able save their work to a file, to document में. Suppose you want to store a small piece of data that accessible between application launches. Which data storage option is not is most appropriate preferences. Okay, fine. Store data locally in SQLite. Next topic. Store data locally with SQLite. SQLite is useful when you have relation data. Suppose you are building a social media app. You need to store information about subscribers to the app. This data includes a unique ID for each user and their name. You can easily model this kind of relationship in SQLite database. In this model, you learn how to use SQLite in a .NET MAUI application by using SQLite NET. What is SQLite? SQLite is a lightweight, cross-platform local database. Okay, पूछा जाता है इंटरव्यू, what is SQLite? तो SQLite is a lightweight cross-platform local database that is an industry standard for mobile application. SQLite does not require a server. The SQLite is stored in a single disk file on the device file system. All read and write operations are run directly against SQLite disk file. The SQLite native libraries are built into Android and iOS by default. However, the engine only supports a C++ API. This scenario isn't ideal for .NET developers who want some way for SQLite in .NET to interact. What is SQLite NET? There are several C# wrappers around the native SQLite engine that .NET developers can use. Many .NET developers use a popular C# wrapper called SQLite NET. SQLite NET is an object relational mapper. It helps simplify the process of defining database schemas by letting you use the models that are defined in your project to serve as a schema. What is SQLite NET? So there are several C# wrapper around the native SQLite engine that .NET developers can use. Okay, SQLite NET is an object relational mapper. It helps simplify the process of defining database schemas by letting you use the models that defined in your project to serve as a schema. SQLite NET. तो जैसे कि as an example consider the following class that models are users. एक मॉडल है, उस मॉडल के अंदर दो प्रॉपर्टी है, पब्लिक इंट आईडी गेट सेट और पब्लिक स्ट्रिंग यूजर नेम, ठीक है. डेटाबेस इंजन, C# API, थर्ड पार्टी C# API, योर एप्लीकेशन. Okay, by using an object relational mapper, you can take this initial users class and create a database table called user that has columns for ID
एंड यूज़र नेम फील्ड्स इन द क्लास। अभी क्या होगा, ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपर का यूज़ करके आप क्या करोगे, यूज़र क्लास एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे कॉल्ड यूज़र, जिसके अंदर दो कॉलम है, एक आईडी और एक यूज़र नेम। SQLite NET is shipped as a NuGet package. Okay, you must add this SQLite NET PCL package to your app stores. यदि आपको SQLite यूज़ करना है तो NuGet पैकेज के थ्रू इसे डाउनलोड कर सकते हैं, और पैकेज का नाम है SQLite NET PCL पैकेज, SQLite NET PCL पैकेज। ठीक है, तो इसकी जो SQLite NET is an open source and lightweight library providing easy SQLite database storage for .NET Mono and Xamarin application. This version use SQLite PCL raw to provide platform independent version of SQLite। ठीक है, हम देख लेते हैं इसकी डिपेंडेंसी है क्या कहीं पे। तो डिपेंडेंसी इसकी है कि SQLite PCL raw बंडल ये होना चाहिए स्टैंडर्ड .NET 2.0, अभी 9 चल रहा है, 10 चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं डिपेंडेंसी की। यूज बाय, ये पैकेज यूज किया जा रहा है SQLite NET एक्सटेंशन में, सबसे ज़्यादा डाउनलोड है। हैंग फायर स्टोरेज SQLite में, ओके, तो ऐसे कई एप्लीकेशन है मंकी कैश SQLite में इंटरनली यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, और यदि हम डाउनलोड की बात करें, लाइसेंस इसका होना चाहिए MIT। ओके, दिस इज SQLite NET, वी कैन यूज़ इट। ओके, टोटल 22.4 मिलियन से फुल स्टेटस देख लेते हैं इसका। तो डाउनलोड इसका काफ़ी है, ये वर्जन सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया गया है 1.9.172। दिस वर्जन इज डाउनलोडेड सबसे ज़्यादा। और ये कब लॉन्च हुआ था, ये होता 27/3/2024 को। ठीक है, हाउ टू कनेक्ट to a SQLite database। You can establish a connection to a SQLite database from an app through SQLite connection object। Okay, this class is defined in SQLite namespaces, ये है SQLite namespace, together with the other types and methods SQLite provides। When you instantiate this object, you pass in the file name for the database। वहाँ पे आपको क्या पास करना है, फाइल नेम, मतलब DB का नाम पास करना है। द कंस्ट्रक्टर देन इधर ओपन्स द फाइल इफ इट इज एग्जिस्ट, ओके, या क्रिएट करेगा और क्रिएट्स इफ इट इज़ नॉट प्रेजेंट। तो जब भी SQLite डेटाबेस को आप कनेक्ट करोगे तो सबसे पहले क्या करना है, SQLite कनेक्शन ऑब्जेक्ट को आपको डिफाइन करना पड़ेगा, जो किसके अंदर होता है, SQLite के अंदर, SQLite कनेक्शन ऑब्जेक्ट। तो when you instantiate, okay, when you instantiate this object, you pass in the file name for the database file। Okay, remember that file name should point to a location in the app sandbox। तो फाइल नेम लोकेशन को पॉइंट करना चाहिए। हाउ टू क्रिएट अ टेबल, recall that SQLite NET is an object relational mapper। Okay, object relational mapper, which means you can build your database schema from C# class। ठीक है, डेटाबेस स्कीमा किसके जरिए कर सकते हो, C# क्लास के। SQLite NET can build a database table from an ordinary C# class, but there are many attributes that you can add to a class to provide more metadata। This metadata helps SQLite to enforce features such as uniqueness and apply constraint to your data। The available attributes include table, specify the name of table if you want it to be something other than the class name,
primary key, specify that a column is the primary key. Auto increment is specify that a column should automatically increase in a value when a new row is inserted. Column specify the name of a column if you want it to be something other than the property name. Max length specify the max number of characters that can be used in column. Unique specify that value in the column must be unique from the other row. तो यहाँ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स है, जैसे टेबल स्पेसिफाई द नेम ऑफ द टेबल, प्राइमरी की, ऑटो इंक्रीमेंट कॉलम, max length, unique. Okay, the following code shows an update version of users class that applies these attributes. तो हमने एक टेबल एट्रीब्यूट का यूज़ किया और उसे लिखा यूजर्स, मतलब ये क्या करेगा, स्पेसिफाई द नेम ऑफ द टेबल इफ़ यू वांट इट टू बी समथिंग अदर देन द क्लास नेम. और पब्लिक इंट आईडी, उसमें क्या किया, पब्लिक की, ऑटो इंक्रीमेंट कॉलम आईडी. ओके, तो पब्लिक की इज टिपिकली न्यूमेरिक और ऑटो इंक्रीमेंट होगा, कॉलम अंडरस्कोर आईडी, इसमें अंडरस्कोर आईडी कर दिया. दैट स्पेसिफाई नेम ऑफ कॉलम इफ़ यू वांट टू इट टू बी समथिंग अदर देन द प्रॉपर्टी नेम. यूज़र नेम का मैक्स लेंथ कितना है, 250, और वो यूनिक होना चाहिए. ठीक है, इस पर वैल्यू इन द कॉलम मस्ट बी यूनिक फ्रॉम द अदर ऑल द रोज. After you define your C# class, call the createTable generic method on the SQLite command, SQLite connection class to generate the table in the database. Specify the class as the type parameters. Okay, SQLite connection is को पहले इनिशिएट करेंगे और उसमें फाइल नेम भेजेंगे. फाइल नेम पॉइंट करना चाहिए लोकेशन को जहाँ पे ये एग्जिस्ट है. कौन इंस्टेंस के जरिए हम क्लास क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्रिएट टेबल मेथड, जेनरिक मेथड. उसमें हम पास करेंगे क्या, टेबल का नाम यूज़र, सेम होना चाहिए एग्जैक्ट. इफ़ द टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द डेटाबेस, create table method checks the schema to see if there are any changes. If there are, operation attempts to be update the database schema. How to do basic read and write operation. After you create a table, you can start interacting with it. To add a row, users insert method on the SQLite connection instance and provide an object of appropriate type that holds the data to be inserted. The following code shows how to add a new row to the users table. Public int add new users con.insert users and result return किया. The insert method returns an int which represents the number of rows inserted into the table in the case that the number is 1. To retrieve rows from a table, use the table method. This method returns a collection of objects. So con.table.list. ऐड करने के लिए con.insert, गेट करने के लिए con.table का नाम, देन टू लिस्ट. द टेबल मेथड रिटर्न्स अ टेबल क्वेरी, generic table query object. To get a list, use the to do method as shown in preceding example. Execute a SQLite query by using link queue. The table method retrieves all the rows from a table. On most occasions, you want to return only a subset of rows that match a set of specified criteria. For this task, use link queue with SQLite NET. SQLite NET supports many common link queue queries include where, take, skip, order by descending, thereby, elemented, first of default, then by descending, count.
With these methods, you can use the extension method syntax or link your C# syntax. For example, here is the snippet code that enables you to retrieve the details of a specified users. Let's suppose public users get by username, string username. Okay, from you in con.table where u.username is equal to username, select you user the first row default. Update and delete rows. You update a row using a SQLite connection object update method. You provide an object defining the row to be updated with its new values. The update method modifies the row that has the same primary key values as provided object. The value returned is the number of rows changed. If the value is 0, then no rows with the matching primary key were found and nothing was updated. The next snippet shows this method in action. ओके एक हमने मेथड बनाया अपडेट यूज़र्स जहाँ पे हमने पैरामीटर लिया यूज़र टाइप का int result is equal to 0 result is equal to con dot update and then return remove rows from a table with the SQLite connection object delete method. The simplest form of this method takes the primary key of the items to be deleted as a pointer. As shown in the following example, this form of the delete method is generic and requires a type parameters. The value returned is the number of rows removed from the table. Public int delete users int user id int result is equal to 0 result is con dot delete users user id result. Next unit is exercise store data locally with SQLite. स्टोर डेटा लोकली विद SQLite एक्सरसाइज करना है इसमें. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओपन द एप्लीकेशन, क्लोज ऑल, लेट मी स्टॉप द प्रीवियस वन, क्लोज अदर्स, क्लोज ऑल. ओके, the best way to clone, okay, if you don't want this, so define a SQLite entity. okay, तो सबसे पहले एक मॉडल बनाएंगे, मॉडल के अंदर एक क्लास बनाएंगे, क्लास का नाम दे देंगे पर्सन. ठीक है, क्लास का नाम दे देंगे पर्सन. Just a minute, something is off. Let me close it, rerun it. Model, okay, person is there now, and we'll create the public int id and public string name. Save the person.cs. okay, right click on the people project node. okay, from the solution explorer in Visual Studio and manage NuGet package. इसमें हम क्या करेंगे, minimize it, right click, this no manage. okay, manage NuGet package इसमें नहीं आएगा. एक बार इसमें चेक कर लेते इसमें आता है क्या. मैनेज यूज़र सीक्रेट ऐड न्यूगेट पैकेज आ रहा है, राइट. इसमें ऐड न्यूगेट पैकेज में डालेंगे SQLite, प्रेस एंटर टू कंफर्म इनपुट. ओके, SQLite SQ, okay,
add NuGet package. Okay, SQLite PCL raw SQLite. We have a multiple SQLite data. हमें जो चाहिए वो कौन सा चाहिए, SQLite NET PCL. Okay, 1.9.172 is the latest. और आप देख सकते हैं SQLite NET PCL यहाँ पे ऐड हो गया. दूसरा तरीका है कि आप क्या कर सकते हो कि .NET CLI मतलब यहाँ पे एंटर कर सकते हो करके. ठीक है, by using Visual Studio Code, open the terminal and this package with following command. कुछ कारण से नहीं आ रहा है इसमें. Not find the any project. Okay, project नहीं है दिख रहा है इसमें. Just a minute. CD my shipment. अब इसमें ऐड करूँगा तो आ जाएगा. ठीक है, ये ऐड हो गया. तो ये दो तीन तरीके. पहला तरीका मैंने बताया, राइट क्लिक कीजिए सॉल्यूशन पे, ऐड न्यूगेट यदि विजुअल कोड में है, और SQLite टाइप कीजिए SQLite, एंटर कीजिए. एंटर करने के बाद SQLite NET PCL चूज़ करके सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा. दूसरा तरीका है डायरेक्ट, यदि आपको पता है फाइल पैकेज रेफरेंस लिख के पेस्ट कर दो, वो एक ऐड हो जाएगा सबसे फास्ट. तीसरा तरीका, गो टू द टर्मिनल, select the my first MAUI ऐप मीन्स प्रोजेक्ट का नाम आपको पहले सेलेक्ट करना है उस डायरेक्टरी को, और फिर उसके अंदर आपको कमांड लिखनी है .NET ऐड पैकेज SQLite NET PCL. ठीक है, मल्टीपल वे. ऐड SQLite attributes. Okay, in the personal.cs, this one, in the personal.cs, add a using directive for SQLite namespace to the file for the person class. This directive lets you use the SQLite attributes. Okay, using SQLite annotation the person class with the table attribute and specify the table name as people. So annotation लिख देते हैं table people. Okay, and then public key auto increment, this is public key, and auto increment, this is max length 100, not null, or we can mark it as a unique. max length हम डाल देते हैं इसमें 250. save the person, open the person repository, examine the person repository class. This class contains incomplete skeleton code with to-do markers where you add the functionality to access the database. Okay, so here we will do that. Okay, in the init function, check to see if connection isn't equal to call null. If so, return immediately. Okay. Okay,
तो पहले समझा देता हूँ इस कोड को, फिर लिखते हैं यहाँ पे। तो अभी तक हमने सिर्फ person.cs बनाया है, ठीक है। अभी यहाँ क्या कह रहा है, नेक्स्ट स्टेप कनेक्ट टू द डेटाबेस। अब डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, एक रिपोजिटरी बनानी पड़ेगी रिपोजिटरी फोल्डर के अंदर। तो हम रिपोजिटरी बना देते हैं क्लास, ये बन गई हमारी रिपोजिटरी, ठीक है। तो एग्जामिन द पर्सनल रिपोजिटरी, द क्लास कंटेंट्स इनकम्प्लीट, ओके। Adding a add a using directive for the SQLite and people models namespace to the file for the personal repository। तो यहाँ सबसे पहले हम ऐड कर देंगे यूजिंग SQLite and using model, that is also required। Add a private SQLite field named called connection, ओके। एक प्राइवेट फील्ड बना देंगे called SQLite connection, field name called database or connection, we can call it as a connection, ठीक है। if connection is null in init function, call this db path, we have to set db path, we'll do that। Initialize the con field to connect the database using db path variable, okay। Insert a row into the database in personal person repository class, the field find the add new person method to insert a new person object, replace to do comment in it string, okay। retrieve rows from the database, तो जब भी रिट्राइव करने एक मेथड होगा गेट ऑल पीपल, उसके थ्रू इनिट, पहले सबसे इनिट कॉल होगा। इनिट में क्या होता है, सबसे पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड होगा और रिटर्न कर देंगे टीपी को, ठीक है। इंटीग्रेट द रिपोजिटरी इनटू यूआई, ठीक है। यूआई में इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे, क्रिएट मॉवी ऐप जो है उसके अंदर सबसे पहले ऐड करेंगे। पहले हम ऐड मॉवी में हमने क्या करना है कि क्रिएट मॉवी प्रोग्राम है, ठीक है। क्रिएट मॉवी ऐप जो है उसके अंदर में
सबसे पहले पाथ बनाएंगे बिल्डिंग बिल्डर के ऊपर, ठीक है। फाइल एक्सेस हेल्पर, फाइल एक्सेस हेल्पर क्यों नहीं आ रहा है, क्लिक क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये हेल्पर अभी बना नहीं है, ठीक है। सेव द मावी प्रोग्राम, expand app.xml, add a public static property called person repo. This property holds a person repository, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे with the help of exercise repo। तो सबसे पहले जाएंगे हम फाइल एक्सेस हेल्पर, फाइल एक्सेस हेल्पर हम क्रिएट करेंगे, फाइल एक्सेस हेल्पर, पर्सन रिपोजिटरी, पर्सन रिपोजिटरी ये कहाँ पे होगा, रिपोजिटरी के अंदर, इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, डीबी, ये कनेक्शन है, कनेक्शन का यूज़ हुआ है नहीं कहीं, SQLite कनेक्शन कहीं पे भी यूज़ नहीं हुआ, ठीक है। ठीक है, फिर से इस पे काम करते हैं। सबसे पहले पर्सन, पर्सन किसके अंदर होगा, मॉडल के अंदर, मॉडल के अंदर पर्सन हमने बना लिया, ठीक है। बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, ऐड SQLite भी हो गया है,
और फिर उसके बाद कनेक्ट टू द डेटाबेस, पर्सनल रिपोजिटरी है हमारे पास, ठीक है। उसके अंदर क्या करना है सबसे पहले कि ऐड अ प्राइवेट SQLite फील्ड नेम्ड कॉल्ड कॉन टू द क्लास अबव द init फंक्शन, अबव द init फंक्शन। इसका नाम दे देते हैं अंडरस्कोर कॉन CONN, ठीक है, कॉन कर दिया। अब क्या लिखना है यहाँ पे, if con is not null then return, this way the initialized code for SQLite database only runs only, ठीक है। Con isn't equal to null, if so return immediately, मतलब कनेक्शन यदि नल नहीं है तो रिटर्न हो जाएगा। This way the initialization code for the SQLite database only runs once, ओके। यदि एक बार एक क्रिएट हो गया है तो रिटर्न होता जाएगा init। Initialize the cons field to connect the database using db path, ओके। सो इसके नीचे में हमें क्या लिखना है, con dot db path and con dot create table person, ठीक है। Insert a row into the database, सो add new person है हमारे पास, ठीक है। अब क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ कॉल करना है init method basic validation to ensure the name was entered, enter this line, कौन सी लाइन एंटर करना है, result is equal to con dot insert new person is equal to name, then status शो करना है, retrieve rows from the database, get all people, सबसे पहले क्या कॉल करेंगे init and return con table dot to do list, integrate the repository into the UI, सो उसके लिए हम क्या करेंगे, main maui program dot cs, उसमें जाएंगे in the create maui function, in the create maui function after the statement that at main page singleton service the app code to perform following task, create a string variable named db path, create a string variable named db path, initialize this string with the expression file access helper dot get local file people dot db3, which is this one, use dependency instruction to add the person repository class as a singleton service to the app. The person repository class exposes a constructor that takes the path to the database file as a string parameter. तो हमने क्या किया, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, कौन सा, ऐड सिंगलटन बिल्डर डॉट सर्विस, ठीक है। बिल्डर के अंदर हमारे पास काफ़ी सारा
सर्विस के अंदर है ऐड स्कोप, ऐड ट्रांजिएंट, और ऐड सिंगलटन। उसमें पर्सनल रिपोजिटरी डाला जो एक बार क्लिक होगी, और एक्टिविटी यूटिलिटीज़ में क्या ये हेल्पर कोड है वेरियस एक्टिवेटर सर्विस का डॉट क्रिएट इंस्टेंस ऑफ पर्सनल रिपोजिटरी और डीबी पाथ। ठीक है, एंड build return builder.build save the MAUI program, expand app.xml in the solution explorer, then open the app.xml.cs, add a public static property called personal repo. This property holds a person repository object to app class. सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे and repo. Fine. Dependency injection process automatically populates the repo parameter to the constructor. Test the application. We'll see. Where is the UI? मेन पेज में हमें एक क्विट लेना है, मेन पेज डॉट XAML, इसकी जगह हम ले लेते एक नया पेज कॉल्ड पर्सन पेज पेस्ट। नाउ पेज का नाम क्या है, पर्सन पेज शेल पेज।
run the application. ओके, तो हमने ये पेज क्रिएट कर दिया है। जैसे पेज में मैं नाम डालता हूँ टेस्ट यूज़र, ऐड, so one record added, name test user. If I get it, I can see one record test user. User 2, add it to 3, 3, 4, get it, add one records added, name test user. Let me remove and add the same users. Failed to add the test user, error unique constraint field, people.name. तो हम देख सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं कि हम पर्सन को ऐड कर रहे हैं और गेट कर रहे हैं। तो एक बार फिर से कोड को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि हमें एक स्ट्रिंग, ओके, हमें सबसे पहले डीबी बनाना है। और डीबी कहाँ बनेगा? maui program.cs में। तो हमने एक डीबी बनाया, उसका नाम है people.db3। अब उस db3 को फैच करना है, ठीक है। सिर्फ नाम लिखा हमने, किसके हेल्पर से? फाइल एक्सेस हेल्पर, ठीक है। फाइल एक्सेस हेल्पर डॉट गेट लोकल पाथ, ये कहाँ पे स्टोर हो रहा है? फाइल सिस्टम डॉट ऐप डेटा डायरेक्टरी। तो सिस्टम डॉट आई ओ पाथ डॉट कंबाइन फाइल सिस्टम डॉट ऐप डायरेक्टरी फाइल नेम। तो इस तो इसमें ये डायरेक्टरी स्टोर है। यहाँ से हमने डीबी पाथ लिया और डीबी पाथ को हमने पास ऑन कहाँ पे किया? क्रिएट द इंस्टेंस ऑफ पर्सन रिपोजिटरी, ठीक है। उस इंस्टेंट को, ये सिंगलटन इंस्टेंस है, राइट। उस इंस्टेंस को हमने क्रिएट किया, क्रिएट इंस्टेंस पर्सन रिपोजिटरी, ठीक है। इसके इंस्टेंस यहाँ पे क्रिएट किया और टेबल क्रिएट किया। हो सकता है ये डेडिकेटेड एक पर्सन के लिए, कल को हमें काफ़ी सारी लाइब्रेरी है तो हम डीबी रिपोजिटरी लिख देंगे और इसमें n नंबर ऑफ़ टेबल सेट कर देंगे। तो एक बार डीबी रिपोजिटरी इनिशिएट हो गई तो दूसरे टाइम यदि हमारे पास इंस्टेंस है वो तुरंत रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे कॉल किया, कहाँ से? पर्सन रिपोजिटरी से, इनिट डायरेक्ट हमने यहाँ से कॉल किया। और कॉन डॉट टेबल डॉट पर्सन टू, गेट करते समय हमें सिर्फ क्या करना है? लिस्ट को रिटर्न कर देना है। और एंटर करते समय क्या करना है कि इंसर्ट करना है, ठीक है। तो ये है SQLite का एक स्मॉल एग्जांपल।
back to the website. So here you can see the items. Use SQLite asynchronously. अब ये क्या चीज़ है? If you run queries on a database in synchronous way, मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, one by one, it can lead a synchronous, okay? It can lead to performance problem and unresponsiveness. SQLite has a synchronous API, okay? So synchronous versus asynchronous. So this is क्या? आपने सुना, उसने बोला, दोनों एक साथ हो रहा है. वो बोल रहा है, आप भी बोल रहे हो, वो आप सुन रहे हो और बोल रहे हो, सुन रहे हो बोल रहे हो, ठीक है. तो सिंक्रोनस. असिंक्रोनस क्या होगा? क्यू वन बाय वन, राइट. तो इसमें क्या करना है? इफ़ यू रन द क्वेरीज ऑन द डेटाबेस इन सिंक्रोनस वे, it can lead the performance problem and unresponsive apps. SQLite NET has a synchronous API that you can use to keep your application responsive. In this unit, you learn how to use the SQLite NET asynchronous API to ensure that your application remains highly responsive. Understand asynchronous query. App until this point, you executed all of your database operation on the UI thread. However, to build a highly responsive mobile application, you want to do things a little differently. If you run the database operation on the UI thread, it might cause the UI to freeze if the operation takes a long time to complete. To solve this problem, SQLite NET includes a synchronous API through a synchronous connection. For example, हमने जब कनेक्शन बनाया, ठीक है, कहाँ पे? मॉवी प्रोग्राम में, ठीक है. तो ये क्या हो रहा है? सिंक्रोनसली हो रहा है. बट हमें क्या करना है कि क्या करना पड़ेगा? टू क्रिएट अ टेबल असिंक्रोनसली यू कुड यूज़ द क्रिएट टेबल असिंक. क्रिएट टेबल असिंक यूज़ करना पड़ेगा. SQLite कनेक्शन इंस्टेंस कहाँ पे लिखा हुआ है? अभी नहीं है, ठीक है. तो इसकी जगह क्या लेना पड़ेगा? SQLite async कनेक्शन, और इसकी जगह लेना पड़ेगा क्रिएट. पहले क्या था? क्रिएट टेबल, राइट. तो इसकी जगह लेना पड़ेगा क्रिएट टेबल असिंक. Perform async operation with SQLite. The SQLite connection class exposes similar operation as its synchronous counterpart. However, the operations all task-based for background uses. The common available asynchronous operation include create table async, drop table async, get async, insert async, update async, delete async, query async, execute scalar async, to list async. Create table async मतलब create a table based on indicated class. जहाँ पे देखो create table async लिखा है, उसमें क्या पास किया? पर्सन. तो create a table based on indicated class पर या particular class के बेस पे क्रिएट. ड्रॉप टेबल अगेन, इसको हम ड्रॉप भी कर सकते हैं. ड्रॉप टेबल असिंक, ठीक है. गेट असिंक, गेट असिंक, गेट असिंक क्या है? गेट असिंक का क्या मतलब होता है? गेट असिंक मतलब गेट द रिकॉर्ड इन द टेबल दैट कोरिलेट्स टू इंडिकेट क्लास. जैसे कि यहाँ पे गेट ऑल है, तो हमने क्या यूज़ करना है? गेट असिंक टेबल डॉट गेट
इसमें नहीं आएगा। कौन डॉट गेट async, inside async, this should be inside async. अपडेट async, इसी को हम क्या कर सकते हैं, अपडेट async, डिलीट async, ये डिलीट करना है यहाँ डिलीट async, क्वेरी async, execute async, execute scalar async। क्या होता है स्केलर async, runs a direct SQL query and returns a single result। ओके, execute async क्या है, runs a direct SQL query and returns the number of affected row। query async क्या है, runs a direct SQL query and returns an object। okay, to list async, execute the table method asynchronously। to list नहीं आएगा इसमें। okay, the following code shows an example of how to use the to list async method। so add all users async, so if you see here in this example to list async, right, method fetches all the users from database asynchronously। if you use this method UI remains responsive even if there is a large set of users। तो उसके लिए हमें सिर्फ क्या करना है, कलेक्शन ले लो जिसमें डेटा को हमें स्टोर करना है जो UI को अपडेट करेगा। तो लिस्ट यूजर्स इज इक्वल टू अवेट कनेक्शन टेबल यूजर्स डॉट टू लिस्ट async must be on UI thread here for each variable u in users user list dot add u। okay, let me run this application।
तो हमने क्या किया है कि पुराने जो दूसरे कोड थे उसमें थोड़ा सा चेंज किया है ताकि एरर ना आए कंपाइल टाइम। अब हमने क्या किया है कि यहाँ पे यूज़र ऐड किया है, यूज़र 1, डिस्प्ले हो रहा है रिकॉर्ड। तो देख सकते हो आप कि पुराना रिकॉर्ड अभी भी स्टोर है, ठीक है, और यूज़र 1 नया रिकॉर्ड हमने ऐड किया। अब अंतर बस इस बात का कि पहले हमने असिंक्रोनस कॉल नहीं किया था, अब ये असिंक्रोनस गेट के लिए। और डेटा सेव जब भी करते हैं हम इंसर्ट असिंक करते हैं, इंस्टेंट ऑफ ओनली इंसर्ट वी आर यूजिंग इंसर्ट असिंक, ठीक है। सो दिस इज द मेन थिंग। तो समरी, storing data locally on mobile device can be useful for improving performance. Instead of consistently making calls to remote server to get data, you can store this important data locally and retrieve it quickly. You can create a local database in .NET MAUI, .NET Multiple Platform App UI app using SQLite. SQLite Net is a C# wrapper around SQLite. SQLite exposes a synchronous API. Okay, asynchronous API की जी कंफ्यूजन है तो एक बार फिर से, asynchronous मीन्स क्यू में चले जाता है डेटा। क्या होता है? क्यू में चले जाता है, पहला गया फिर दूसरा फिर तीसरा, और synchronous मतलब दोनों पैरेलली, ठीक है। So SQLite exposes an asynchronous API to help ensure that applications UI always remain responsive. So in this module you learned how to store data locally in the .NET MAUI, compare different data storage options that are available in .NET MAUI application, store relational data in SQLite database, interact with the database asynchronously to make sure that your UI remains responsive. So that's we have done, and we complete the build mobile and desktop apps with .NET MAUI, but we have still lots of things which we have to read it, like if I talk about the trigger, okay, behaviors, handlers, तो ये सब भी टॉपिक है जिसे हमें कवर करना है। तो लेट्स सपोज यदि बात करूँ तो go to the learn microsoft.com, okay, select here mobile application, or you can do like that also, developer, estimate, back to this, here you type mobile, click on it, okay. So we can learn in other ways like fundamentals, composition, generics, markup, extension, namespace, pass argument, okay, data and cloud service deployment. So that will be cover in .NET MAUI guides. So I'll create I, I will add on the new videos under this same playlist, okay. So in the next video I'll pick the random topics. Let's suppose first I will be cover the few things uh, like deployment or data and cloud service. तो इस तरीके से हम छोटे छोटे टॉपिक लेके और बारीकी से .NET MAUI को समझ सकते हैं, ठीक है। सो कीप
stay tuned this channel, subscribe and like this video, and keep motivate to me with by likes and subscribe, और आने वाले समय में we'll add few more videos here. So for now, that's all from my side. Thank you.